Doing is there will be two-prong learning. On one, we will give the class, we will record the session, and we will keep it on a YouTube. Okay. Uh, every day we keep it on Yes, a sir. YouTube also, so that you can see it. I will make sure that you are learning assembly language inside out. Many times people think this is tough subject, microprocessor architecture, but I will make it very fun and easy things. Obaid Ashik, you have to open up the camera or just remove yourself from the class. Nice. Everybody will should be with the cameras on and not allowed to switch off cameras. It is same as offline class. Okay, and it should be better than that. We will be having better than this our classes, inshallah taala. Getting my point? Zahra, admit. But you have to be on time. एक दो दिन हमें लगेंगे streamline होने में, doesn't matter. But you have to be on time. You have to wait before the class starts. 10:30 is the class. 10:15 you should be ready with the pens and all. Okay? Everything should be ready. Okay? Walaikum Assalam. Majid Yaqub. Some few faces I already know, like Majid Yaqub I already know. Sahrab, I think I already know. Obaid Ashik is also from the same college, I guess. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Hassan, I don't know exactly. Faisal Rashid has come up. We have few more guys come up. Okay. This is the first day. It will take a little time, and we had some internet issue, so I have to go out and fetch my internet from the phone and all. So that is why it will took some time. But by tomorrow it will be 10:30 sharp, and my classes are going to be perfect as your offline classes. Okay, like you have offline classes, my classes will be same like that, and even better than that. Okay, let me share my screen now to get going. Everybody will open up the cameras. Nobody will stay without the camera. Okay. Let me keep it down for a while. Is the screen visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's get started then. Now there are issues of joining other guys and all, because I have only one screen here. I have to set up two screens tomorrow. Then 1 second, where is that? This one's. Somebody has come up. Admit Ashik Mushtaq. Ashik Ahsan Mushtaq. Okay. We are around 9 guys here. Ahsan Mushtaq, you have to open up the camera. Open up camera, everybody. Now let's get started for a 15 minutes at least today. Then we come up tomorrow with the proper class. Reis Yusuf. ये अब लोग आ गए. They come so late. Faisal Rashid, Mehak Butt, Reis and Ahsan, open up the cameras or leave the class. Everybody has to open up the camera and keep it open in my class. You cannot keep it off. Okay? This is a proper class, what we have. So I'm saying we will have two-pronged learning. In one, what we do is we have the class. Okay, this is all practical class. Keep that in mind. So we build up some theory firstly. We understand a little bit. I will promise you that nobody would teach you assembly language like you will be learning in this class. The programming part, I am telling you. So it won't be like you think it's just an online class and now we are not, it's kind of a casual. It won't be casual. It will be rigorous. Faisal Rashid and Reis, you are not understanding what I'm saying. Open up the camera or leave the class. There is. So I'll be joining from the laptop. My camera is not opening here. So in the laptop there are the webcams. Why can't you open? I'll be joining from the laptop. I'm opening my laptop. Okay. No problem. Few days it will take little time. Reis, Yusuf, your camera is also off. Keep it on.
Sir, I'm trying to open it. Okay. Wait a So in second. the meantime, I will give you the levy of a one day, wherein the things will settle down. In the meantime, I would like to teach something, okay? Because our class time is literally over actually, okay? But let's get it done. वन नोट था मेरे पास यहाँ पे कहीं पे खोला था वन नोट ओके इज दिस स्क्रीन विजिबल Yes, sir. okay okay let's get started with the microprocessor. When we say microprocessor, remember that thing. One second, give me a second, let me maximize this thing so that we can swap the screens. Okay, when we say microprocessor, in short we write it like a mu p. It's a microprocessor because before microprocessor comes in, the devices were like this, that your ALU chip was somewhere, your other chip was somewhere, your other chips were somewhere. Later on we put on everything like this control unit, whether it's our registers. Mainly you have three things in your microprocessor. One is the arithmetic logical unit, which does the job, a control unit which directs everybody how to do the job, and registers is the memory of CPU. So how many things? Repeat with me. We got the ALU, arithmetic logical unit, which is actually the circuitry which will do the job, but it doesn't know what to do. How to do it is the control unit, which tells everybody how to do things. And then the registers, which is like, for example, I will say here add AX comma BX. This is what I am telling you. Add AX comma BX. That means these are two registers, AX and BX. The name of two registers. One name is AX, another name is BX. I am telling to add whatever is in AX and whatever is in BX. Say for this is 4, here we have 5. And this instruction is telling add 4 plus 5, that is 9, and keep it in the AX. It will add the 2 and keep the result in the AX itself. So the ALU, arithmetic logical unit, will do the addition. It will add 4 plus 5, but it doesn't know कि 4 AX में है, 5 BX में है, and it is the CU which makes to the adder circuit. There will be a circuit called adder circuit. Its input, AX's output and adder's input will be on, so that this 4 will go into the adder, okay, and then BX's output and adder's second input will be on, so that 5 will go into the adder circuit, and then you can add them together, and then after adding them together the adder will add it, no problem. But who is making the 4 to flow from the AX register to the adder, 5 to flow from the BX register to the adder, is the control unit. It is the control unit which gets this 4 into the adder, 5 into adder. Then after you finish it adding 5 plus 4 9, adder is capable to add 5 plus 4 to make it 9. So output will be 9, but this 9 has to flown back to the AX. It will all be done by CU. And these are the registers, the memory units where you store things. Getting? Somebody was there coming up, I guess. You getting my point, what I'm saying? Adil Pare, admin. Yes, sir. Rais, Faisal Rashid, your camera is still off. Adil just joined, open up the camera and stay tuned. Do you understand what I'm saying? So I am saying in totality that processor has the arithmetical logical unit which will do some add, multiply, whatever you want to do. But how you do it, it's not knowing that how to do it. It is the CU which will spread around the control and tell everybody how to do the things. Then it is the registers which store the things. But if you pack them together on a single chip, if you pack ALU, your control unit and your registers in a single chip, okay, where everything is on a single chip, it will be called as a microprocessor. So microprocessor means where all the things of processor are on a single chip. Raha yaad? Is my voice coming clearly? Yes, sir. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि जिसमें जो प्रोसेसर की जो सारी चीज़ें हैं उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें ALU है, उसमें हाँ जी और क्या बताया मैंने, कंट्रोल यूनिट है और हाँ वो एवरीथिंग इज इन अ सिंगल chip. If you put everything on a single chip, we call it as a microprocessor. आदिल परे आप ठीक से बैठें और कॉपी निकालें, आप ऐसे नहीं बैठते हैं. दिस इज अ क्लासरूम.
You cannot sleep on a bed or couch. Do you understand? Yes, sir. Sanctity of classroom, you should understand this is classroom. You can't sleep here. So get up, sit straight, and you should have a copy and pens. Write whatever I am telling you. You should write and make notes. Do you understand? Okay. So I am saying before the microprocessor comes up, all the units of my processor were on different chips. Then we put them all on the same chip. We call it a microprocessor. Now, second thing was, what's the difference between, we have the microprocessor which we have to read is the 8086 microprocessor. Mute yourself up. आपसे वॉइस आ रही है, म्यूट करें अपने आप को. ओके. नाउ 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें और दूसरों में क्या फ़र्क है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा यहाँ पे आज. जो माइक्रो प्रोसेसर मेनली चीज़ है, आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, जो आप प्रोग्राम लिखते हो, दिस इज एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. व्हाट इज प्रोग्राम? है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी. फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपको ए और बी को ऐड करना है, फिर आपने कहा कि नहीं अब ए माइनस बी करना है, या फिर ए को बी को ऐड करना है, वो सी में डालना है. मतलब हमने ऐसे चीज़ें कही प्रोग्राम के अंदर हमारे पास. या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंपल एक ऐड प्रोग्राम है, तो ऐड प्रोग्राम में क्या कहेंगे हम? पहले आप यूज़र से एक नंबर ले लो, फिर यूज़र से दूसरा नंबर ले लो, फिर उसको ऐड करो. हो गए 3 इंस्ट्रक्शंस. सो दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी कॉल्ड एज ए प्रोग्राम. ठीक है ना? ये प्रोग्राम जो आपका है असल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें कुछ काम करता है. जब हम इस प्रोग्राम को, जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें 2-4 इंस्ट्रक्शंस थी, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, हम इन सब इंस्ट्रक्शंस को देते हैं किसको? माइक्रो प्रोसेसर को करने को. हम बोलते हैं इसको ये आप काम करके दो हमें. ठीक है ना? तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या आएगी? पहली इंस्ट्रक्शन आएगी. इससे फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी. जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी इसे हम कहते हैं फैच. तो हमने पहली इंस्ट्रक्शन को फैच किया. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को पहले ये क्या करना पड़ेगा? डीकोड. ये इंस्ट्रक्शन डीकोड करनी पड़ेगी. वही कंट्रोल यूनिट जो आपका है वो डीकोड करता है कि मुझे करना क्या है इस इंस्ट्रक्शन का. फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि आप यूज़र से एक इनपुट मांगो. अब ये डीकोड करेगा. ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो बोलेगा लोगों को, वो बोलेगा चीज़ों को कि आपको कीबोर्ड से लानी है नंबर. ठीक है ना? तो ये कंट्रोल यूनिट करेगा. सो दैट्स कॉल्ड डीकोडिंग. उसके बाद जब डीकोड हो गया, उसके बाद अब एग्जीक्यूट करोगे. उसके बाद क्या करोगे आप? एग्जीक्यूट. यानी कि कुल मिला के जो आपको हो रहा है मसला कि आपने इंस्ट्रक्शन को फैच किया, यू फैच द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, और करता था ये माइक्रो प्रोसेसर ही. तो माइक्रो प्रोसेसर गया, उसने मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन लाई, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ने उसको डिकोड किया. जब वो डिकोड करेगा, जब माइक्रो प्रोसेसर डिकोड कर रहा है, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है. अब वो उसके ऊपर काम करेगा. ठीक है? मेरी तरफ आप देखें. स्टॉप शेयरिंग. एक सेकेंड. मेरी तरफ सारी देखें. लुक एट माई कैमरा. मैं कह रहा हूं कि जो माइक्रो प्रोसेसर, एंड रिप्लाई बैक मी व्हाट आई एम आस्किंग यू. आई एम टेलिंग यू माई क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी रिगरस. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ कैजुअल क्लास, एंड यू हैव टू बी वेरी सीरियस स्टूडेंट्स and working with me. Then and only then you will get benefit from me. Otherwise it's just a futile process. मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो खुद, जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर हूँ, पीछे आपको बुक्स दिख रही है, ये मानो इंस्ट्रक्शंस हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर खुद गया इंस्ट्रक्शन लाने, उसने लाई इंस्ट्रक्शन आई. अब माइक्रो प्रोसेसर खुद इसको डिकोड कर रहा है. अब पढ़ रहा है करना क्या है. उसके बाद जब वो समझ आ गया क्या करना है, अब वो एग्जीक्यूट करेगा. अब वो उस चीज़ को करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल महक है यहाँ पे. महक को मैंने, ये मानो माइक्रो प्रोसेसर है, मैंने इसको कहा कि मैंने एक डब्बा रखा है, इसमें इंस्ट्रक्शंस है. आई गॉट इंस्ट्रक्शंस. ओके. नाउ इंस्ट्रक्शंस, महक प्रोसेसर खुद जाएगी इंस्ट्रक्शंस लाने. ठीक है? नाउ महक इज गोइंग herself to get the instruction. Now she is, after next step she will decode it. What is it all about? For example, उसमें लिखा है open the some device, open some device. Okay? So पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो महक पढ़ेगी, उसके बाद वो समझेगी कि कौन सा डिवाइस मुझे ओपन करना है, मुझे कैसे करना है, वो कंट्रोल क्या करना है
है ना। उसके बाद महक जाएगी, एग्जीक्यूट करेगी, वो डिवाइस को ओपन करेगी। लेकिन जब महक, मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब महक उसके बाद, असल में जब ये इंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन है जिसमें ये लिखा है कि इसको अब पढ़ना है, इसको अब पढ़ाई करनी, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब महक डिकोड कर रही है उस इंस्ट्रक्शन को, डिकोड, क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? No, sir. नो, शी वोंट बी डूइंग इट, राइट? क्योंकि प्रोसेसर लगा है इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, उस वक्त डिकोड नहीं होगा। प्रोसेसर लगा है इसको डिकोड करने में, उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन का फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, वी कैन नॉट मूव टू द सेकेंड इंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके Yes. फॉर यू? विल इट डू इट? Yes. कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसने फेच करना है, उसने डिकोड करना है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करना है। जब उसने ये सेट किया, ये एक इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कैन इट मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? नो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन ऐड प्रोग्राम, ऐड प्रोग्राम में पहली इंस्ट्रक्शन है गेट नंबर 1 नंबर फ्रॉम यूजर, ठीक है, एंड पुट इट इन, देन द सेकंड इंस्ट्रक्शन विल बी पुट इट इनटू द वेरिएबल a. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गेट सेकंड नंबर, पुट इट इन द वेरिएबल b. Third instruction will be what? To add the 2. And fourth instruction will be put the result in the C variable. लेकिन जब आपका प्रोसेसर पहली इंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या वो दूसरी इंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं। इवन जब वो पहली इंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसका जब वो फेच या डिकोड कर रहा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, या जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर सकता, है ना। सो एक बॉटलनेक बन गया। ये ऐसा है कि हमारा पेंटर है, उसको पेंट करना है, ये पहले सामान खुद ला रहा है, फिर उसमें मिक्सअप कर रहा है, उसके बाद पेंट कर रहा है। जब तक वो सामान ला रहा है, जब तक वो पेंट को मिक्स कर रहा है, तब तक कोई पेंटिंग हो रही है? नहीं हो रही है, यानी कि काम तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैक्सिमम टाइम जो सीपीयू है वो सर्व करेगा चीज़ें लाने में, डिकोड करने में, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और फिर जब एग्जीक्यूट की टाइम होगा उसमें फटाक से वो करेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम सीपीयू बैठेगा फजूल चीज़ों में। इसलिए 8086 ने काम किया, उसने कंसेप्ट लाया पाइपलाइनिंग का। किसका कंसेप्ट लाया? पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग में उसने क्या किया? लेट मी अगेन शेयर द स्क्रीन एंड राइट इट ऑन दिस। सो अगर आपको मेरी बातें समझ आए कि मैं क्या बोल रहा था, यू विल अंडरस्टैंड इट नाउ। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. 8086 ने काम किया, उसने कहा कि आप प्रोसेसर के हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो, है ये एक ही चिप में, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये वाली जो डायग्राम है ये सीखनी है। अभी मैं इस डायग्राम पे नहीं आऊँगा। अगर आप देख रहे हो इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है। फिलहाल ये बात इस डायग्राम में हमें समझ आएगी इस वक्त। वी आर केपेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इज दिस डायग्राम विजिबल क्लियरली? Yes, sir. देखें, इसमें क्लियरली 2 यूनिट्स हैं, एक BIU, एक EU, है ना। ये EU है और ये BIU दिख रहा है। ये जो बस इंटरफेस यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट, BIU मींस बस इंटरफेस यूनिट, रखा याद? क्या होता है BIU? हेलो, Bus interface unit. व्हाट इज EU? एग्जीक्यूशन यूनिट। जो बस इंटरफेस यूनिट है उसका काम है वो फेच और डिकोड कर रहा है। एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम बस इंटरफेस यूनिट आपको चीज़ें ला रहा है। यानी कि आपने 2 हिस्से कर दिए। आपने कहा एक हिस्सा जो है इसका नाम रखा बस इंटरफेस यूनिट और दूसरा यूनिट है एग्जीक्यूशन यूनिट। जो प्रोसेसर में करता है एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शंस को लानी है, पहले इंस्ट्रक्शंस लानी है। इसके लिए इसने एक यहाँ पे प्रीफेच क्यू रखा। क्या रखा? प्रीफेच क्यू। प्रीफेच क्यू का मतलब क्या है कि आपने प्री मीन्स पहले ही फेच करके रखी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, ठीक है। वी हैव गॉट द इंस्ट्रक्शंस हियर, प्रीफेच। अब 2 हिस्से जब हमने किया, बस इंटरफेस यूनिट क्या करेगा काम? बस इंटरफेस यूनिट विल गेट इन द मीन टाइम ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ओके। जब तक एग्जीक्यूशन काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन इज वर्किंग ऑन सम इंस्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग ऑन सम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूशन यूनिट काम कर रहा है किसी इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है।
लेकिन बस इंटरफेस यूनिट इन द मीन टाइम चीज़ों को ला रहा है. मेरे पास एक ही स्क्रीन है, सो आई हैव टू स्टॉप एंड सो दैट आई कैन वॉच यू गाइस. व्हाट आई एम सेइंग टेक्निकली इज कि मैंने दो हिस्से किए प्रोसेसर के. ये मानो एग्जीक्यूशन यूनिट था, ठीक है, और ये मानो दूसरा जो है ये बस इंटरफेस यूनिट आ गया. एग्जीक्यूशन यूनिट तो मुझे एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा था तब तो वो ना फैच कर रहा था ना डिकोड कर रहा था. मैं कह रहा हूँ भाई साहब तो एग्जीक्यूट कर, कोई मसला नहीं इंस्ट्रक्शन पे, तब तक जो बस इंटरफेस यूनिट है वो बाकी इंस्ट्रक्शन लाता जाएगा. एंड नॉट इवन वन इंस्ट्रक्शन, इट विल गेट अ बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, तो उसका मतलब है जब वो बंच ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखेगा लाएगा, वो तो कहीं रखनी पड़ेंगी ना, है ना. लेकिन ये कर रहा है इन पैरेलल. दिस इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि आप इन पैरेलल कर रहे हो कि मैंने अब अपने दो हाथ रखे, एक हाथ से मैं काम कर रहा हूं, पेंटिंग कर रहा हूं, ठीक है, दूसरे हाथ से मैं वो पेंट ला रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, वो यहां से मैं कर रहा हूं चीजें, यानी कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं. सो व्हेन द टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली वी कॉल इट पाइपलाइनिंग. सो इट मीन्स कि हमारी एफिशिएंसी अब बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि मैं अपना जो हूँ इन एग्जीक्यूशन यूनिट अब मैं कर पा रहा हूँ वो, और इन द मीन टाइम मैंने यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ला के रखी. इज दैट क्लियर फॉर यू गाइस? समझ में आ रहा है? आप मेरी बात एक सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा ना कोई चीज़, डोंट वरी, डोंट से यस सर, आई हैव लॉट ऑफ पेशेंस, आई कैन टीच यू सिंगल थिंग 50 times. डू यू अंडरस्टैंड? देर इज नो इशू अनलेस अनटिल वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. हमें प्रोग्रामिंग करनी है, इसकी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखने हैं, ठीक है. ये बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये सबसे टफ सब्जेक्ट है. अगर आपको कॉन्सेप्ट है, मैं आपको गारंटी दूंगा इस सेमेस्टर में आप बोलोगे असेंबली लैंग्वेज इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट. दिस आई कैन गारंटी. एंड एग्जाम जब आएगा आप कहोगे कि अगर हम पास होंगे तो असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास 100% आएंगे, ठीक है. बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट आपको बताऊंगा. अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, यू आर सीरियस स्टूडेंट, यू आर राइटिंग नोट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल गारंटी यू विल राइट प्रोग्राम्स आफ्टर 2-4 days. यू विल स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्राम्स, ठीक है. बट यू हैव टू बी विद मी, एंड you have to be with me like in a rigorous class, not just casual mode. Do you understand? Make copies, make notes. I will be also supplementing notes and all, but clear concept firstly. So मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि मैंने अब प्रोसेसर कितने हिस्से किए? Open up the mics and speak. Open up the mics. You don't have to keep it mute. Two. है ना? Mehak, open up the mic. You guy, what's your name? Faisal Rashid, open up the mic. You, हमने दो हिस्से किए. एक हिस्से में हमने क्या किया? बस इंटरफेस यूनिट बनाया. तनवीर साहब, तनवीर क्लास? तोशा क्लास? आवाज नहीं आवा कि तोशा म्यूट तुम. तोशा मेरी आवाज इवान. वनियो. मैं वन तो ये टाइमिंग क्या क्लासेस? आज गो ना इंटरनेट डिस्टर्ब. वह कोर मैं बस चलावान पानी फोन पे, वह गो तास में योर ऑफिस ये ना मकबूल साहब निस रूमस मस. अच्छा ठीक. तो कस में क्लास तकरीबन एके बतरा क्लास याल तो क्या टाइमिंग इमन क्या टाइमिंग वोन तो ये टाइम टेबल कोर ना मैं शेयर ता हमस तय वुशो स नजम के बदिमस नजर एक सेकंड पेरियो तु दियो कि बस अब दा क्लास तो पात दियो तु ना ठीक. ओके ठीक इंशाल्लाह दियो ती क्लास आराम से. Okay. So I am saying that I have divided the microprocessor into two, right? Let me share my screen again. Okay. So I am dividing my microprocessor into two now, right? Bus interface unit and execution unit. So why I have divided two? To have the pipelining. In the meantime, I am doing the execution of a particular instruction. I will get the bunch of instructions. And I am asking you the question, if I am getting the instructions, bunch of instructions I am getting, right? Do I need some space for that or not? Obviously, I will need some space, right? Yes. So therefore, if you see on this side, there is a 6-byte prefetch queue. Now see, look at this diagram. Setup
Now you see, we got a prefetch queue here. This is a prefetch queue. What is the prefetch queue doing? The bus interface unit is, in the meantime, the processor is doing here the job, execution unit is doing the job, executing certain instruction. You get the bunch of instructions like 6 byte means 8 bits. We got a 6 byte instructions here already there. यानी कि अब आपके प्रोसेसर को वेट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं शॉर्ट में बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम ईच ए बिट tomorrow. We will explain it tomorrow. आज मैं इतना I will conclude my class. I am saying I have divided a microprocessor. Firstly, what is a microprocessor, baby? Microprocessor is where we have what? ALU plus memory, which is registers and Everything on a registers. on a single chip. piece of- On a single chip. पहले अलग अलग चिप्स भी थी. तो अब जब एक चिप पे आ गए. Number 1. Number 2. I have divided my processor into 2 units. First unit is called bus interface unit and second is called execution unit. execution. Everybody has to write and speak up. You can't stay like that in my class. Okay, nice. Faisal Rashid, try to speak up. Okay, beta? Yes, try to speak up. अगर किसी को समझ नहीं आता मैं आपको बता रहा हूँ. I want you guys to teach. This is simple as it is. I am not here कि मैं आपको बताऊँगा BCA में क्या किया, उसमें क्या किया, इसमें क्या किया. I am not here for that. I am here to tell you that this I will start from the scratch. I will not ask you a single question from the BC and all. If this is your first day in computer science, you should be able to understand my class. But you have to answer me back. Okay, you have to write, you have to answer me back, you have to be serious student. Only thing I need that. Rest, leave it to me. So I have divided process into 2 units, bus interface unit and execution unit, so that I will have the pipelining. I will have what? Pipeline. Does it make sense? I need pipelining, right? So that's the one thing. So if I knew pipelining, I'm getting while the processor is executing something, I am getting a bunch of instructions. Therefore, bus interface unit here is doing what? It is getting, while your processor is doing something, your bus interface unit is from the memory getting फ्रॉम योर प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम था उसमें से 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस वो ला के रखता है. एंड कंट्रोल यूनिट इज द गाय हु डिकोड्स. ओके, कंट्रोल यूनिट इज द गाय हु डिकोड्स दिस इंस्ट्रक्शन एंड देन गिव्स टू द योर एग्जीक्यूशन यूनिट टू एग्जीक्यूट. सिंपल एज इट इज. सो व्हाट आर दीज रजिस्टर्स हियर एंड व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर? दिस डायग्राम विल बी क्लियर टुमारो. इतना आज काफ़ी है. आई विल एंड अप हियर. I will end my class today because other classes are have to happen. कि आज लेट हो गया था. ठीक है ना? बात समझ आई थोड़ी सी? आज हमने थोड़ा सा ही पढ़ा लेकिन समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी रखेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है ना? Okay, see you guys tomorrow 10:30 to be sharp. Allah. Tomorrow or Monday? Monday. Monday. In fact, Monday. Monday. Definitely. Thank you. Thanks for correction.